Hello students, the question is a galvanometer shows full scale deflection for a current Ig. If a shunt of resistance S1 is connected to the galvanometer, it gets converted into an ammeter of range 0 to I. When the resistance of the shunt is made S2, its range becomes 0 to 2I. Then S1 upon S2 is option A I plus Ig upon I minus Ig, option B I minus Ig upon I plus Ig, option C 2I minus Ig upon I minus Ig, option D I minus Ig upon 2I minus Ig. So the problem is based on the topic galvanometer and its conversion with to the ammeter. So when the galvanometer is converted into an ammeter, we have to place a shunt in parallel to it. So we have a galvanometer, suppose it is having a resistance of G, and this galvanometer is having a full scale deflection with respect to this current Ig. Now in the first case, what happens that this galvanometer is converted into an ammeter by placing a shunt resistance in parallel to it. There is a shunt resistance of S1 value in parallel to it. And in this case, the range of the current is from 0 to I. For full scale deflection, the current is I. And it remains same for the galvanometer. Ig remains same for the full scale deflection. Now, this is the first case. So, for this particular case, suppose the maximum current I is flowing into it. Then, according to Kirchhoff's current law, at this particular node, let us call this node as node A, the maximum incoming current is I. The maximum current in the galvanometer branch is Ig. So, the current going into the branch of S1 is I minus Ig. And in parallel, we know that voltage is same. So, it means that the voltage across the galvanometer as well as the voltage across the shunt, it remains same. And voltage according to Ohm's law is given by current multiplied by the resistance. So we can write the equation as voltage across the galvanometer Vg, it should be equal to Vs1, and Vg is equal to Ig into the resistance. So Ig into G. This is the value of the voltage across the galvanometer, and it must be same as the voltage across the shunt because they are in parallel. So this is equal to the current in this case in the shunt, which is I minus Ig multiplied by S1. So this is our equation number 1. Similarly, for the second case, when the shunt of S2 is connected, the range changes. So in the second case, so you can draw the diagram here. So in the second case, there is a shunt. There is a shunt S2 which is connected across the galvanometer. And the maximum current of 2I is flowing into it. That is 0 to 2I is the maximum current is 2I. The same full scale deflection current of Ig flows in the galvanometer, and this shunt is S2. So S2 is having a maximum current of 2I minus Ig. For the full scale deflection, this particular current will flow in the shunt. So now, as we have done in the previous case, the voltage across the galvanometer should be equal to voltage across the shunt S2. And the voltage across the galvanometer is given by the current through the galvanometer multiplied by the resistance of the galvanometer, which is G. Current through the galvanometer is Ig, and the resistance of the galvanometer is G. And this should be equal to the current in the shunt, which is 2I minus Ig multiplied by S2. Now, solving this two equations, by dividing these two equations, we can get this term Ig into G and Ig into G. In the left hand side, it cancels out and we get the value 1. So 1 is equal to, suppose we are doing 2 divided by 1, so we obtain 2I minus Ig upon S2 upon I minus Ig into S1, and we have to find out S1 upon S2. So S1 upon S2 should be equal to, cross multiplying it, we get this value as 2I minus Ig upon I minus Ig. So this is the particular ratio. Option C is correct here. 2I minus Ig upon I minus Ig. We have to find out this ratio S1 upon S2. Better we divide 1 divided by 2. So straight away we can obtain S1.
we need not obtain the cross multiplication, we need not use it, we directly obtain the result in the first step, 1 divided by 2. So this is the answer here. तो यहाँ प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया एक पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर है, उसकी मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जिसको हम बोलते हैं, मैक्सिमम करंट जिसको बोलते हैं, वो IG दी हुई है। एक शंट S1 कनेक्ट किया गया फर्स्ट केस में, तो उस केस में जो करंट रेंज है वो 0 से I तक है। फिर उसके बाद हमने एक शंट कनेक्ट किया S2, तो उस केस में जो रेंज है करंट की वो है 0 to 2I। अब हमें निकालना है रेशियो S1/S2 का। तो S1/S2 रेशियो निकालने के लिए हम दोनों केसेस को कंसिडर करेंगे। पहले केस में जब शंट S1 है तब उस कंडीशन में मैक्सिमम करंट जारी है I। IG करंट सेम रहेगी दोनों ही केसेस में, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट। तो अगर करंट I एंटर करती है टोटल एमीटर के अंदर, तो I माइनस IG पार्ट जाएगा S1 शंट के अंदर। और पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द शंट। वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर के लिए हम निकालेंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, करंट और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, IG इंटू जी। सिमिलरली करंट थ्रू द शंट होगी हमारी I माइनस IG, और रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी इसकी S1। ये वैल्यूज पुट करके हमने लिखी इक्वेशन 1। फिर उसके बाद इसी तरीके से सेकंड केस में दिया गया है कि एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए बजाय S1 के S2 कनेक्ट किया गया, लेकिन जब हमने S2 को कनेक्ट किया तब रेंज 0 से बढ़ के 2I हो गई। तो इसका मतलब ये है कि शंट ब्रांच में जो करंट जाएगी वो 2I माइनस IG जाएगी। फिर से वही लॉजिक लगाते हुए गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज को इक्वल किया हमने शंट की वोल्टेज के, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। VG की वैल्यू सेम ही रहेगी जैसे प्रीवियस केस में थी, IG इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे करंट में कोई बदलाव नहीं आया, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट अभी भी उतनी ही है। VS2 जो है वो चेंज हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमारी करंट जो है इस ब्रांच में अब जो है चेंज हो चुकी है, वो हो गई है 2I माइनस IG, एंड दिस इज, और ये मल्टीप्लाई किया हमने S2 के साथ। इस तरह से हमारी इक्वेशन 2 आ गई। हमने इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड किया। बेटर ये रहेगा एक और स्टेप बचाने के लिए, 1 डिवाइड बाई 2, यानी कि अगर हम इस तरह से लिख लें, I माइनस IG टाइम्स S1 अपॉन 2I माइनस IG इंटू S2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड कट होके 1 हो जाएंगे। IG इंटू जी दोनों तरफ है, तो ये कट होके 1 रह जाएंगे। तो यहाँ से हम जो है बाकी टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और S1 अपॉन S2 की वैल्यू डायरेक्टली हमारी आ जाएगी 2I माइनस IG अपॉन I माइनस IG, जो कि ऑप्शन C करेक्ट है हमारा यहाँ पे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।